Hello students, I hope all are you fine. Dear students, I am Surendra from chemistry lecturer. Class 12th, subject chemistry, lesson 1, solid state, part 4. Dear students, in previous video I discussed from number of atom per unit cell, and today I discuss from number of atoms per unit in point number 1 for cubic unit cell. Dear students, for cubic unit cell हमें क्यूबिक यूनिट सेल को फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, for crystal lactic each corner of a cubic unit cell is common in a unit cell. The contribution each corner a 1/8, क्योंकि इसके 8 यूनिट सेल्स हैं पर क्यूबिक सेल में. तो डियर स्टूडेंट्स, तो कॉर्नर क्या हो जाएगा 1/8. कंफर्म हुआ. टू ईच यूनिट सेल. कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स. इसी का नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं. ईच फेस ऑफ यूनिट सेल is common into two unit cell of contribution is sphere of phase center is 1/2 each of each unit. इसमें बताया जा रहा है ईच फेस ऑफ यूनिट सेल इज कॉमन इनटू 2 यूनिट सेल. उसके प्रत्येक फेस पर 2 यूनिट्स कॉमन होते हैं. ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसे कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा इस स्फीयर ऑफ फेस सेंटर. उसके फेस सेंटर पर 1/2 ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रत्येक यूनिट से. पहले बताया फॉर क्यूबिक यूनिट सेल फॉर क्रिस्टल लैक्टिक ईच कॉर्नर, प्रत्येक क्रिस्टल लैक्टिक के कॉर्नर पर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज कॉमन इन 8 यूनिट सेल. उसके प्रत्येक कॉमन कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल कॉमन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8 टू ईच यूनिट सेल. उसे हम किसमें
कैसे लिख सकते हैं 1/8 और टू ईच यूनिट सेल। यस फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। सर दूसरा पॉइंट है अगला है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर distribution या variation for different cubic system can be calculated। इसमें हमें बताना है द नंबर ऑफ एटम की संख्या बतानी है पर यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में, और डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम, उसके अलग अलग क्यूबिक सिस्टम में कैन बी कैलकुलेट, उसे हमें क्या करना है कैलकुलेटेड करना है। नंबर वन इन primitive unit cell or simple unit cell डियर स्टूडेंट्स, इसे और करके भी लिख सकते हैं एस सी, वन नेम, टू नेम और थर्ड नेम, 3 नेम से क्वेश्चन आ सकता है। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है, या सिंपल यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं इसे, सिंपल क्यूबिक ऐसी मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉमन है सभी में। इसे कैलकुलेट करने के लिए देयर आर इसके बारे में बता रहे हैं, देयर आर 8 कॉर्नर एटम that are shared between 8 unit cell, डियर स्टूडेंट्स देखिए, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से, 8 कॉर्नर है, मैंने आपको सेल बताया था 8 कॉर्नर कैसे काउंट करते हैं। हमने ये क्लस्टर बनाया था, इसे स्कूल लाया था डियर स्टूडेंट्स। कितने कॉर्नर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 कन्फर्म हुआ, 8 कॉर्नर है। इसी को बता रहे हैं प्रत्येक, यानी कि 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कहाँ गया? अभी कन्फर्म हो गया था, एटम पर यूनिट सेल इक्वल टू 8 से 8 कन्फर्म हो गया। कितना बचा डियर स्टूडेंट्स? 1 एटम यूनिट सेल
डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने कैलकुलेट किए हैं क्यूबिक सिस्टम में, वो कितने आए हैं? 1 एटम पर यूनिट सेल। फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए, इन पहले कौन सा था? प्रिमिटिव। अब कौन सा आएगा? बॉडी। इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, वार फोर करके। इन बॉडी क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल। वार फोर BCC। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स? BCC कहाँ से आया? BCC कन्फर्म हो गया। अब हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को काउंट कॉर्नर को कैलकुलेटेड करना है। ये इसमें देखिए, देयर आर 8 corner atom shared in 8 unit cell and one body center atom एक उसकी कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बॉडी सेंटर में। ठीक, डिफरेंस देखिए, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल प्लस 1 कहाँ से आया? 1 बॉडी सेंटर एटम। ये कहाँ पर है? उसके बॉडी में प्रेजेंट है। 1 सेंटर एटम पर यूनिट सेल। 8 बन जा 8, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एटम पर यूनिट सेल। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स? 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 इंटू 1 होगा प्लस 1 इक्वल टू 2। कन्फर्म हो गया? 1 ये और 1 ये, 2 हो गया। कन्फर्म हो गया डियर स्टूडेंट्स? अब किसमें याद करते हैं? थर्ड पॉइंट आ जाता है। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बताएंगे, वार और FCC। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट? जैसे उससे पहले बताया था FCC के बारे में, BCC के बारे में और SC के बारे में, सेम टू सेम उसी तरह होगा। देयर आर 8 corner atom shared in 8 unit cell and 6 पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, and 6
phase center centered atom shared in two unit cell in two unit cell. Dear student, ध्यान से देखेंगे इक्वल टू 1/8 कॉर्नर इंटू 1/8 यूनिट वो एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, यूनिट सेल प्लस कितने हैं 6 फेस हैं, तो इन पे क्या लिखेंगे 6 फेस एटम, फेस एटम इंटू 1/2 कौन से 1/2 यूनिट सेल, यहाँ पे लिखेंगे एटम पर यूनिट सेल 2 3 जा 6 8 1 जा 8 1 जा 8 कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। ये क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एटम पर यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डिफाइन कर सकते हैं। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वार और FCC देयर आर 8 कॉर्नर तो होंगे एटम शेयर कर रहे हैं इन 8 यूनिट सेल के साथ में एंड 6 फेस सेंटर्ड एटम, उसके फेस एटम होंगे, फेस सेंटर्ड एटम उसके फेस यानी सेंटर्ड में प्रेजेंट होंगे, शेयर्ड इन 2 यूनिट सेल और 1/2 यूनिट क्या एटम यूनिट सेल्स, 8 1 जा 8 1 इंटू 1 आएगा प्लस 3 इंटू 1 3 1 जा 3 इक्वल टू 4 यानी 3 और प्लस 1 इक्वल टू 4 एटम पर यूनिट सेल। डिफाइन हुआ डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, in a cubic crystal of type AX BY of a compound atom A are at corner and B are at face center predicate the formula of compound। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, एक क्यूबिक क्रिस्टल है ऑफ टाइप AX और BY है, ऑफ अ कंपाउंड एंड एटम A आर एट कॉर्नर, एटम ए कहाँ पर है कॉर्नर पे एंड B आर फेस पर है, सेंटर फेस पर है। प्रेडिकेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला कंपाउंड करना है। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन एटम A आर एट ए कॉर्नर, कहाँ प्रेजेंट है कॉर्नर पर। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। इसी में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ए पर यूनिट सेल इक्वल टू 8/8, कितना आ गया 1। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स 1 एटम
B are at 6 फेस, फेस की बात की गई है ना, बी आर फेस सेंटर पर है, बी आर एट 6 फेस, किसमें होता है ये, एफसीसी के अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए लिखा है ब्रैकेट में मैंने, एफसीसी के लिए लिखना नहीं है आपको। एटम बी आर एट 6 फेस, तो नंबर ऑफ एटम बी पर यूनिट सेल इक्वल टू क्या आएगा, 6/2, 3 या 6 इक्वल टू 3। कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ए का कितना है 1, ए, बी के कितने हैं 3। आंसर कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ nearest neighbor of a particle is called coordination number। कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट फाइंड करते हैं, कंफर्म हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग है डेंसिटी ऑफ लैक्टिक मैटर। डियर स्टूडेंट्स, इस पर डिपेंड कि 1 न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पेपर में 101% मिलेगा, बिकॉज आई कैन सी इन दिस प्रीवियस एग्जाम बोर्ड ऑफ डिपेंड इन डेंसिटी ऑफ लैक्टिक मैटर और न्यूमेरिकल्स इन 3 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन कर रहे हैं हम इसे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल represent mass of unit volume of unit cell। डियर फ्रेंड्स, डेंसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इक्वल टू
mass of unit cell upon volume of unit cell. डियर स्टूडेंट्स, रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन के क्यू इंटू एन ए, वेयर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल एम. डियर स्टूडेंट्स, where mass of atom is equal to capital M है, small a बराबर रेडियस ऑफ क्यू, और हमारे पास में क्या है Na इज एवोगाड्रो constant Z is equal to volume of simple cubic comma BCC and FCC is dear students, unit cell is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स क्रिएट कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स.